Hi Tanya, how are you? Can you hear me? Am I audible? आप मुझे सुन सकते हो? Okay, great, great. So शुरू कर, I mean थोड़ी देर wait करते हैं. Let some people join and then we will start. Okay, thank you for confirming, Tanya. Thank you. इसमें तान्या, if you're there, I cannot see if people are joining in. तो अगर कुछ लोग join कर लेते हैं तो please आप मुझे message कर दीजिए. I will start the live. We can start. Okay. Okay. So good evening everyone and a very warm welcome to this live. और आज का जो हमारा लाइव का टॉपिक है दैट इज ऑन इंट्रोडक्शन टू माइंडफुल पेरेंटिंग. सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज माइंडफुल पेरेंटिंग और उसकी क्या ज़रूरत है, व्हाई डू वी नीड इट एट दिस टाइम, एंड इज देयर एनी, एम आई ऑडिबल, इज देयर एनीथिंग, शुड वी स्टार्ट? Tanya, you can just message me. Yeah. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाई माइंडफुल पेरेंटिंग इज नीडेड एट दिस टाइम. तो क्या ज़रूरत है कि जब वी ऑलरेडी हैव अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग,
What is mindful parenting and why is the need for this kind of a parenting now? सो फर्स्ट थिंग इज कि जैसे बदलती दुनिया के साथ हर चीज़ को बदलना है। आजकल हर चीज़ का इफ़ यू सी वी आर गेटिंग अ 2.0 वर्जन ऑफ एवरीथिंग। सो पेरेंटिंग का भी पेरेंटिंग शुड आल्सो बी अपग्रेडेड। पेरेंटिंग का भी एक नया मॉड्यूल आना चाहिए, एक नया स्टाइल आना चाहिए। वही पुराना स्टाइल जो आज से 20 साल 50 साल पहले चलता था, 60 साल पहले चलता था, वो आज की जनरेशन में नहीं चल सकता। Because as we all know, the children these days are very different and very smart. So the parents have to be according to them, you know, they have to parent them from that level itself. So इसलिए mindful parenting बहुत important है। और second जो mindful parenting why we need it is कि you know we should be in tuned to the child. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, सो द पेरेंट्स होते हैं मदर और फादर, वो जब छोटा सा बच्चा सिर्फ पैदा होता है, यू नो द चाइल्ड कैन नॉट टॉक, द चाइल्ड इज लाइक जस्ट 2-3 months ओल्ड, एंड द फादर एंड द मदर जस्ट बाय लुकिंग एट द चाइल्ड दे कैन मेक आउट कि बच्चे को क्या चाहिए, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल कि यू नो इफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग, तो उसका रोना सुन के ही द पेरेंट्स को पता चल जाता है वेदर द चाइल्ड इज हंग्री, उसको फीड चाहिए, या फिर उसको डायपर चेंज चाहिए, या फिर उसके कहीं पेट में दर्द हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो द पेरेंट्स नो एवरीथिंग अबाउट द चाइल्ड। बट व्हाट हैपेंस कि जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वी स्टार्ट लूजिंग दिस कनेक्शन विद द चाइल्ड। और यू नो आफ्टर 12-13 years एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन द चाइल्ड एंटर्स अ टीनेज and we are absolutely clueless about what the child is thinking, what the child is doing, what the child wants. और पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में इतना डिस्कनेक्ट आ जाता है कि आई गेट सो मेनी पेरेंट्स हु कम टू मी एंड हु टेल मी कि वी डोंट नो आवर चाइल्ड हैज, जब से टीनेजर यू नो द चाइल्ड हैज टर्न टीनेज, वी डोंट नो व्हाट द चाइल्ड इज थिंकिंग, वी डोंट नो उनके फ्रेंड्स कौन है, वो क्या बातें कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता बच्चे की लाइफ के बारे में। सो हाउ कैन दैट डिस्कनेक्ट कम्स? देयर वाज द सेम चाइल्ड जो छोटा सा बच्चा था और उसको हमें देख के हर चीज पता चल जाती थी, और ऐसा क्या हो गया, and where did we lag or where did the child, you know, the relationship lag, कि now we are absolutely clueless about the child. Now when the child need actual parenting जब चाहिए बच्चे को, हमें पता ही नहीं है करना क्या है बच्चे के साथ। So this is where the mindful parenting comes. Mindful parenting tells you how to be attuned to the child, how to be tuned into the child at all times. So एक connection जो है, एक सा बच्चे के साथ जो connection बनाना है, that is very important, and that connection has to be maintained, चाहे बच्चा मतलब जिस भी एज तक पहुंचे, not even 18 years, we you know say कि childhood is only till 18 years, but even after 18 years the parents and the child should have that kind of a bond कि दोनों में से किसी को भी किसी की जरूरत है, and they should be there for each other. So this is where mindful parenting comes, that you know we have to form that kind of attunement with the children, we have to form that kind of bond with the children. सो ये बॉन्ड कैसे बनता है? अब हाउ कैन वी बी अट्यून्ड टू द चाइल्ड? अब ये क्वेश्चन आता है कि वो तो ठीक है, बट हाउ डू वी डू इट? सो सबसे पहला है, यू नो दिस इज व्हाट आई कॉल द पिलर्स ऑफ पेरेंटिंग, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ पेरेंटिंग इज कम्युनिकेशन. वी always should have an open communication with the children. बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो कुछ ना कुछ करके हम लोग बच्चों की बातों को अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। द चिल्ड्रन आर टॉकिंग एंड वी आर लाइक यस हु जस्ट सेइंग यस, एंड बाय द टाइम वी आर आइदर ऑन अ फोन, or we are on a computer, we are checking a mail, or we are checking social media, or we are chatting with someone else, and the child is coming and telling us so many things. The child wants to tell us, wants to tell us so many things, और हम लोग हूँ आगे से कर देते हैं, and so the children come to know, the children know that you know the my parent is not talking, is not listening to me, सुन नहीं रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे। If this happens repeatedly, the child shuts down. So it is very important to have a communication. और कम्युनिकेशन जैसे मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है नॉन वर्बल और एक होता है वर्बल। और जो कम्युनिकेशन होता है, दिस इज बेसिक द मोस्ट ऑफ द, हमें लगता है कि सिर्फ बातें करना एक दूसरे से इज द कम्युनिकेशन, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, बट नो, words play only 7% of the part in the whole conversation that we have, not only with our children, with anyone. It can be, you know, with any relationship, it can be with your boss, it can be in your office, it can be used anywhere.
ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट कम्युनिकेशन फॉर्म्स ओनली, द वर्ड्स फॉर्म ओनली 7% ऑफ द होल कम्युनिकेशन थिंग. The 55% part is the non-verbal communication. तो नॉन वर्बल में क्या आता है हमारा, द बॉडी लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग, वेदर बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, नीचे देख रहे हैं, आई टू आई कांटेक्ट है या नहीं है, हाउ द पर्सन इज यूजिंग द हैंड्स और ट्राइंग टू हाइड समथिंग. सो बहुत सारी चीजें हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पता चलती हैं. एंड 38% इज द टोन ऑफ द वॉइस. So when we are talking to each other, how is the voice? Is it very clear? Clarity है, या फिर जब कोई झूठ बोलता है तो वो बहुत दबी आवाज में बोलता है, द टोन इज वेरी लेस, या आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा आवाज रहेगा अगर कोई झूठ बोल रहा है. if someone is actually telling the truth and someone is really talking to you, it will be like the communication will be an eye to eye contact and an open communication with a strong voice throwing out. So the communication is very important. एंड एज आई सेड, तो वाई विद द चिल्ड्रन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों के साथ क्या होता है कि जस्ट लुकिंग एट द चाइल्ड, व्हेन द चाइल्ड इज टॉकिंग, we can make out many things, that whether the child is hiding something, or whether the child is upset about something, or whether the child is feeling sad, feeling bad about something. Just looking at the child और उसके साथ जो communication होता है, हम वो देख सकते हैं. And when we are, as a parent, we are 100% attuned with the child. हमें बच्चों को देख के, उनसे बात करके उनकी हर चीज के बारे में पता चल जाता है यहाँ. और यही दिस इज द पॉइंट, बहुत जहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं. हम बच्चों को क्या बोलते हैं, बात करो, मैं सुन रही हूँ, बट अलॉन्ग विद दैट वी कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर. प्रोबेबली अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं, और यू आर टॉकिंग टू chatting with a friend on the phone, or you are sending an official mail, or you're reading a book, you are doing something else. आपका most of your concentration is somewhere else, and you are just hearing to the child. आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं. Listening is, when you give 100% to that one conversation which is happening. That is what is the total listening to the child. और हमें बच्चों के साथ जब कम्युनिकेशन करना है, उनके साथ उनको वी हैव टू लिसन टू देम, नॉट जस्ट हियर देम. हियरिंग से क्या होगा, आपको आधी बातें सुनाई देंगी, आधी मतलब आपके दिमाग में रजिस्टर होंगी, आधी आपको नहीं पता चलेगा. एंड हाउ द चाइल्ड वाज फीलिंग, उसके इमोशंस क्या थे, उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या थे, यू विल नॉट गेट टू नो फॉर द चाइल्ड. So this is where most of the communications fail, and this is where बच्चा धीरे धीरे आपके साथ आके बात करना बंद कर देगा. And when the child stops talking to you, the disconnect between the parent and the child comes. So this is where in mindful parenting we tell you how to maintain that communication channel, how to keep that communication channel open, and it has to be open at all the times. So और मेन एक और बात होती है listening to the child, that we should listen to the child without any judgments, without saying, interrupting the child कि तुम्हारी गलती हो गया. For example, if the child is coming and telling कि आज मेरे स्कूल में किसी ने मेरी नोटबुक का पेज फाड़ दिया, क्यों फाड़ा, तुमने कुछ किया होगा, you must have written something. So we start accusing the child instead of knowing, asking the child first कि क्या हुआ, why it happened. अच्छा, someone else did it like that, क्यों किया, किस लिए किया, know the whole story, and then you talk to the child if the child is asking any solution from you. विदाउट द चाइल्ड आस्किंग द सोल्यूशन, और आप बच्चे को बता रहे हैं कि आपने ये किया होगा, इसलिए तुम्हारी गलती है, ये तुमने ऐसा कर दिया, दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. सो दैट द चिल्ड्रन टेक अ बैक कि मैं अगर जाके अपनी कोई भी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को बताऊंगा, सो दे विल कम फॉल बैक ऑन मी, वो मुझे वापस मुझे गलत ठहराएंगे. दे विल स्कोल्ड मी ओनली, दे विल फाइंड फॉल्ट्स ऑन मी ओनली. तो अगर ये आता है, nobody wants to listen to कि that person is wrong, कोई अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता. Same thing is with the children, they do not want to hear कि every time the parent is telling them that you are wrong, you must have done something wrong. So slowly क्या होगा, बच्चे आके आपके साथ बात करना बंद कर देंगे. They will stop sharing, and when they stop sharing, again that disconnect is formed between the parent and the child. So this is वो जो पेरेंट और चाइल्ड का बॉन्ड होता है, विच इज फॉर्म्ड एट बर्थ, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ द पेरेंट्स दैट वी पुश द चाइल्ड अवे. हमारे अपने एक्शंस हैं दैट वी आर लाइक कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग.
unknowingly. Nobody wants to do, no parents wants to do it knowingly, but unknowingly हमें नहीं पता चलता है कि हमारी छोटी छोटी बातों से, हमारे छोटे छोटे gestures के साथ we are pushing the child away from us. And we realize it when, it's like quite a long time has passed after doing all this, and that is the time when we realize, oh, अब क्या हुआ, अब तो ये बच्चे हमारे से बात ही नहीं करते हैं. That is the point, then we know कि now what to do, what should we do, and then we go about finding ways to correct it. So my, suggestion to the parents is that be very mindful of the way you are talking to your children. I'm sorry. So be very mindful of the way you're talking to your children. आप देखिए कि आप बच्चे के, small small actions before talking anything, just blurting out to the child, think, is it necessary, should I tell my child this, is it should I, just tell my child कि you are wrong, किस ढंग से बच्चे को बात करनी है. So you have to think, be very mindful of the way you are talking to the children. So if anybody, this is the communication I have shared. If anybody has any questions about regarding this part, I can take up a few questions. Anybody has any questions? I think live में okay, any questions, please type it, then I will take the questions in the end, right? So the next part is, I mean, this is my book which I have written. This is the book Raising a Mindful Parent, and this book basically combines mindful parenting, mindfulness and spirituality with the practices of parenting. So how we can inculcate mindfulness and spirituality in our parenting, our day to day parenting practices जो है, how can we become little more mindful, little more aware of the way we are forming a bond with the child, and be a little more aware and mindful of, the way we are imparting so many skills, imparting so many life skills to the children when they are growing up. And this book is basically, it's written in a very simple language, and without any medical or psychological jargon. So it helps you, because I know in India we have so many various languages, and English is not the main language. So it's like I've written it in a very simple language so that anybody can understand, whether you are from any region of India, you can understand the language and you can, use it for your children, to strengthen the parent and child bond in your children. And this book also talks about a lot of practices that, we can inculcate in the children from a very young age, for the practices of mindfulness and spirituality. So I have not spoken of not very heavy mind spirituality practices. It is the basics that we can introduce to the children. So बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप मेडिटेट करिए, ये करिए, बच्चों को बहुत छोटी एज से मेडिटेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट एटलीस्ट उनमें जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक सच बोलना, बिकॉज आजकल बहुत सच बोलना एक, इट इज़ अ रेयर, रेयर कमोडिटी, बहुत नहीं मिल रहा है. लोग झूठ बोलने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं. सो अपने बच्चों को सच बताना कि सच बोलना है हर बात में. यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस. सो हैव एम्पैथी फॉर अदर्स अराउंड यू. अपने स्कूल में, I mean, bullying is a very big thing which is happening in the schools. So how can we stop bullying? If we just tell our children that, practice empathy from a very young age. बच्चों को empathy अगर हम सिखाएं कि दूसरों का भी, we have to think about others, think about, अगर if you are, being bullied to someone, उसको कितना बुरा लगता होगा. अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा, आपको कैसा बुरा लगेगा. So just making the child more empathetic towards everyone. So many of the things will, from our society, the problems that we are seeing these days with so many children, they will actually go, and the children will have a very more healthier childhood.
And along with that, gratitude is a very big thing that we should inculcate in the child. So ये तीन चीजें मैंने आप gratitude is like being thankful for everything, thankful for whatever you have. And once a child, अगर parents अपने बच्चे को सिखाते हैं being thankful, the child is aware of the needs of others who do not have such certain privileges, the what the children are having. So they are more they are more in tune, and they grow up to be a more responsible citizen. So mindfulness teaches you all this. This is what mindful parenting is. That we should inculcate all these little practices. तो मैंने आपको तीन practices बताई हैं. One is the being truthful. So and this the second is being empathetic, and the third is having gratitude. Or for these practices, so now what is it, we ask the child that आपको ये करना है, you have to be truthful. So we cannot uh, teach the child to be truthful if you are not truthful yourself. So children, they we have to walk the talk. Children, they do not listen to what we say, but they see what we are doing and they learn from that. So अगर as a parent, अगर हम truthful नहीं है हर situation में, so we cannot expect the child to be truthful. So mindful parenting says that to be a mindful parent is like you have to be truthful first. Mindful parenting वही है कि आप पहले खुद mindful होइए कि what are you doing. So whatever you are doing, your child will be copying that. So if you want your child to be have a very to have strong integrity and have be truthful in in his nature, so you have to be truthful first. आप ये नहीं कर सकते कि आप बाहर कोई आपको फोन आया है तो आप बच्चे को बोल दीजिए, उनको बोल दो पापा घर पे नहीं है, पापा सो रहे हैं या वट एवर. आप झूठ नहीं बता सकते बच्चों को. अगर आप एक बार झूठ बोलेंगे तो फॉर द चाइल्ड a lie is a lie. The child doesn't know कि when the lie is very small and when the lie becomes very big. They cannot distinguish between them. So we have to be very careful हम बच्चों को क्या बता रहे हैं. अगर हम चाहते हैं जो क्वालिटी हम बच्चों में बढ़ाना चाहते हैं वो हमें खुद पहले अपने में लानी पड़ेगी. सेम वे एम्पथी है. एम्पथी वी हैव टू बी एम्पथेटिक अबाउट अदर्स. So ये नहीं है कि if you go to a restaurant, you are shouting at the server who is serving there, or you have the helps at home, you are screaming and shouting at the help, you are talking to them like that, and then you expect your child to be very good and to everyone else. So if the children are saying that shouting, my parents are shouting at everyone, वो एक दूसरे पर भी चिल्ला रहे हैं, वो घर के बाहर भी सब पे चिल्ला रहे हैं, तो बच्चों को लगेगा चिल्ला के बात करना is the normal thing. So the child will also talk to everyone in the same language. But जब आप अपने बच्चे को देखें कि बच्चा चला रहा है, then you will shout at the child कि आपको ऐसे बात नहीं करनी है, you have to talk to the people आराम से. So then the disconnect forms in the child's mind कि ये बोल तो कुछ और रहे हैं, ये कर कुछ और रहे हैं, and the children gets confused that what am I supposed to do now. So this is what you have to be very mindful of the way you are projecting themselves. जैसे आप कर रहे हैं वैसा ही आपका बच्चा आगे करने वाला है. That is what you sow is what you reap. So मतलब अगर आपको अपने बच्चों को gratitude सिखाना है हर चीज पे, so you have to be really thankful for the things you're getting. अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं to be environment friendly, तो आपको लाइटें और फैन बंद करके जाने पड़ेंगे, आपको पानी बचाना पड़ेगा, आपको ज्यादा वेस्टेज नहीं करनी पड़ेगी. Then only the children will learn that yes, my parents are doing it, means this is the right thing to do. Because बच्चों के रोल मॉडल्स पेरेंट्स ही होते हैं. The children look at the parents what they are doing and then they learn, they absorb from them that what is happening. So if you whatever you are trying to whatever you are, the way you are projecting yourself, whatever you are doing, the children are going to imbibe that. So if you want your child to be have a strong integrity, have a strong character, so you have to maintain that character first yourself. So this is the second thing of parenting, which is like be what you want your child to be. This is what mindful parenting says, that हमें बच्चों में गलती नहीं निकालनी है. The children are like वो छोटा सा बच्चा, the child who was born was very pure. उस बच्चे को कुछ नहीं पता था कि दुनिया में क्या जाता है. It is the way we parents have brought up the child, what the child turns out to be. किसी का बच्चा the children are stealing, the children are lying, the children are bullying each other, the children are fighting with each other.
So it is not that the children are learning it. Yes, they have a lot of impact from the social media, they have a lot of impact from the television which is happening, but जो घर पे हो रहा है वो सबसे ज़्यादा impact होता है बच्चों के ऊपर. So we should be very mindful of the way we are raising the children, in this environment. So this is about the I've spoken about two things. Mindful parenting में सबसे पहले communication, how to have that strong bond and be attuned to your children. Or second, I have spoken about whatever qualities you want to imbibe in your child, the way you want the child to be, you should actually first have it in yourself. जैसा आप रहेंगे वैसा आपका बच्चा बनेगा. So anybody has any question till now, so we can answer, then I'll go on to the next one. I'll wait for another 10 seconds, 15 seconds for some question to come. Okay, so the third point, the third portion that I want to talk to you about mindful parenting is, uh, that would be have acceptance for your child and be non-judgmental to your child. So बहुत बार मैंने पहले भी बोला था, बहुत बार ऐसा होता है that the children come to you with some problem and then you say कि this is the way you are wrong. We try to find so many faults in the children. So this is the way when the children are put off, और फिर वो आके आपसे दोबारा बात नहीं करते हैं. So अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ बात करे, आपका बच्चा आपके साथ आके हर चीज शेयर करे, the children should be formed. Is it working fine? Tanya, can you please? Uh, I hope I'm audible. मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? Someone can please write the comment and tell me. Okay. Yes, Shilpi. Shilpi asked me a question. I'm sorry. I think there were so many messages which I missed. Yes, I'm seeing the messages now. So yes, Shilpi, this book is available on Amazon, and the book is by the name of Raising a Mindful Parent, and it is available on Amazon. So you can write. Okay. Yes, I can see the comments now. Actually, मुझे comments नहीं दिख रहे थे, so मुझे I was like just taken aback कि कोई है नहीं है, because I cannot see on the screen here anyone, right? So yes, so we were talking about acceptance. So many times it happens that we as parents, whenever the child comes and tells us something, so we try to find the fault in our own child. You are probably doing something wrong. You did anything wrong, that is why सामने वाले बच्चे ने आपको मारा. आपने पहले कुछ बोला होगा, इसीलिए बच्चे ने आपको आके मारा है. आपने कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए टीचर ने आपको पनिशमेंट दी है. You must have done this, that is why this thing has happened to you. So this should this gives a message to the child that my parents do not trust my trust me. सबसे पहले ये message आता है. The second message that goes to the child is that whatever I do, they do not have faith in me. वो जो भी मैं करूँगा उनको मुझ में गलती दिखेगी. So the children will slowly come and stop talking to you about anything what is happening. So वहां पे आके आपका फिर वो जो डिस्कनेक्ट होता है एक पेरेंट और चाइल्ड का आ जाता है. सो द थिंग इज कि व्हेन द चाइल्ड कम्स एंड टॉक्स टू यू, जस्ट लिसन टू द चाइल्ड कंप्लीटली 100%. जैसे मैंने आपको पहले कम्युनिकेशन में बताया था, लिसन टू द चाइल्ड 100% कि व्हाट द चाइल्ड इज टॉकिंग, वेदर बच्चा सच भी बोल रहा है नहीं बोल रहा है. व्हेन यू लुक एट द चाइल्ड with the non-verbal part of the conversation, you will get to know whether the child is right or whether is hiding any fact, or the child is sharing everything with you. You will get to know at that time. And then again कि whether आपको बच्चे को देख के उसकी जैसे वो आपसे आंखें आंखें मिला के बात कर रहा है, आंखें चुरा के बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, शोल्डर्स ऊपर है, शोल्डर्स ड्रूप डाउन है. So you will get to know so many things about the children कि जो बोल रहे हैं.
सो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कि तुमने कुछ गलती करी होगी. लुकिंग एट द चाइल्ड यू कैन मेक आउट एवरीथिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन, राइट? सो अगर आप if you continue with this kind of a conversation, you know, 100% conversation, then you can know that ठीक है, my child, whatever my child is saying is right. So आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुमने कुछ किया होगा, that is why the सामने वाले बच्चे ने मारा है. तुमने कुछ किया होगा इसीलिए the teacher has told you something that is wrong. So that way you will be more in tune. And when you uh, ask your child, जब आपको, अगर बच्चे ने आपसे कुछ पूछा है कि हाउ आई शुड डू दिस, मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए, देन ओनली इट इज लाइक एडवाइजेबल कि आप बच्चे को जाके बताएं कि दिस इज बेटा वेयर यू हैव डन रॉन्ग एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज व्हाट यू शुड डू. एंड नॉट टेल कि मैंने कहा है इसलिए ऐसा करो, मैंने कहा है इसलिए वैसा करो. अगर आप हर बात में बच्चे को कहेंगे कि मैंने कहा है इसलिए यू डू लाइक दैट, इफ आई एम टेलिंग यू प्लीज डू लाइक दैट, so slowly the child will stop using his own mental thinking, his own creativity, his own logical mind. So that, because it will be like whatever I say my parents discard it, and then they tell me to do what they want me to do. So it's better कि उनको ही मुझे बताने दो, वही मुझे बताएंगे कैसा करना है. So ये करके हम बच्चे को उसको हैंडीकैप कर रहे हैं आगे जाके डिसीजंस लेने के लिए, to take any kind of a decision. Once the child stops making decisions, तो दोबारा उसको decision making capability बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है. So it's better that let them take any decision. जो भी वो decision ले रहे हैं, let them take, but be informed what they are doing, and if they are going to be wrong, अगर आपको पता है कि वो गलत होने वाले हैं, have a backup. And बच्चे गलती करके ही सीखते हैं. Not only बच्चे, हम बड़े भी गलती करके ही सीखते हैं. So it's better that be a backup for your child rather than doing everything for your child. So this is another very important thing of mindful parenting which I have shared. So any questions anybody has, so आप मुझसे पूछ सकते हैं. I will be very happy to answer a few questions. And you can always, I am available, I am there on Facebook, Facebook पे by the name of Dr. Mona Gujral. I am there on Instagram by the name of Dr. Mona Gujral. I am there on YouTube by the name of Dr. Mona Gujral. And if you can follow me anywhere, and I do keep sharing many videos on this the same topic and subject, and I share many blogs I keep on writing on the same subject. So in case you have any problem in any difficulty you're having with your children, you can always, probably you will get an idea how to deal with the children at that stage. क्योंकि बहुत आते ही आते हैं बच्चों के साथ. This is the whole, the whole parenting is like a big journey, and where we learn everything every day. We learn new things about the parents also, and about us, about the children also, and about us also, right? And my book is available, and I do have many programs. One is on emotional health of children. So आप you can contact me अगर किसी को भी बच्चों के लिए emotional health के लिए पता करना है. So I have many programs on that. And I think it was a wonderful session. Thank you everyone for joining. If there are no questions, then probably uh, I think we will close the live. Is there no questions? Right. Thank you so much. Thank you everyone for joining, and take care. Take care, everyone. Thank you.